अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक गॉस लॉ के बारे में कि गॉस लॉ क्या है और इसे किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिड्यूस कैसे करते हैं। आया पढ़ते हैं गॉस लॉ को। गॉस लॉ हम जानते हैं कि द लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज़ नॉन एज फ्लक्स। उसे फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर वही एरिया जो है ना वो इन टर्म ऑफ इंसुलेटर एक बिग एरिया हो, अलो चार्ज सरफेस हो, जो कि एक अलो चार्ज सरफेस हो जिसके अंदर चार्जेस होते हो एन नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो 10 लेट अस कंसीडर a sheet of charges when a flux occurs. We divide the whole area into n number of small pitches such that is shown in figure. हमारे साथ एक एरिया है, इस पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक, अब हम अगर इसका फ्लक्स मालूम करते हैं तो हम इसे n नंबर ऑफ एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि ये चार्ज जो है ना हर एरिया के सेंटर में आ जाए। n number of small pitches is shown in figure such that each charge occupy per small pitch. Thus area is given by delta A1 plus delta A2 delta A3 delta A4 up to so on, and electric flux passing through unit area, electric flux passing through unit area is given by E1 E2 E3 up to so on E of n. ठीक हो गया। Thus the flux passing through unit area is known as flux E is equal to electric flux is equal to E1 delta A1 plus E2 delta A2 plus E3 delta A3 plus so on up to E of n delta E of n. नेक्स्ट वन हम करते क्या है कि हम as we know that A1 is equal to A2 is equal to A3, as we know that A1 is equal E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to E of n, which is all equal to E. Thus, putting in equation number 1, pi of E is equal to E of delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus so on up to delta A of n.
डेल्टा ए ऑफ एन हमारे साथ जो इक्वल है वो है ए की इक्वल है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई ऑफ ए। अब हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ई। ठीक हो गया। इन द सेम वे ये इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर ड्यू टू total area of spherical surface of radius r, total area of spherical surface, thus putting this in equation number 2, इसको equation 2 कर लेते हैं। pi of e is equal to 1/4 pi epsilon naught q over r square into 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया। पाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वेशन नंबर 3। एज वी नो दैट Gaussian surface has n number of charges on its surface and electric flux due to each charge is given by pi of 1 is equal to q1 upon epsilon naught, pi 2 is equal to q of 2 upon epsilon naught, pi 3 is equal to q3 upon epsilon naught, up to so on up to pi of n for n is equal to q of n upon epsilon naught. By combining all pi of e is equal to pi 1 plus pi 2 plus pi 3 plus up to plus pi of n, 1 upon epsilon naught सब में कॉमन है, हम इसे कॉमन ले लेते हैं, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस अप टू q ऑफ n। अब चार्जेस सारे मिलके एक बहुत बड़ा चार्ज प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ना गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ Gauss's law stating that the electric flux of a closed Gaussian surface is equal to 1 upon epsilon times of total charges enclosed. Respected all, thank you so much for watching this video of Gauss's law आपको समझ आ गई होगी और आपकी आसानी के लिए वीडियो। Thank you so much for watching this video.